Namaskar, good morning, Assalamu alaikum, Suraj Singh, civilian engineer Bharat, Faridabad, again to you in your service, to those who are interested and to those who are not interested, both. Reason being early morning, signals are available, I feel, please give videos. I know people are sleeping yet, they can check later on. Bharat, our nation, India, real name Bharat, English name India, and no name Hindustan. Be clear. I am regretful, very regretful that people are really confused for title of this country. Title means name of this country, which is India and Bharat according to constitution of this country, constitution of India or Bharat ka Samvidhan. Real name is Bharat and India, not Hindustan. But I have seen people are ignorant about this. 80 to 90% people use Hindustan, which is really nonsense. All leaders, general public, they don't understand what name of this country is. If I take a different name for you people, shall you feel happy? If I take different name for your family, shall you feel happy? You will not feel happy. It is clear. Name is very important for something. It's not a game. It's not a joke. It's not a play. If you cannot respect your name, you cannot respect others. You cannot respect yourself. Name is very important. If I don't know name of my country, what should I call myself? Stupid person? Idiot person or what? Understand. Open constitution of this country, Bharat ka Samvidhan of this country, and see what does our country have its name for. It's Bharat, it's India, and that's it. I'm not happy with name India, yet it is official, formal, constitutional. Bharat, India, it's written, this is India, that is Bharat, should have been, this is Bharat, that is India. However, it is Bharat and it is India, Republic of India, Bharat Ganarajya. You can check this written on every passport, every circular of government or president, and every order. So be educated, be intelligent, come out of your dreams to take name of your country with respect. Otherwise, keep sleeping. It's up to you. It's only country in whole world. People, majority of people belonging to this country, keep sleeping, keep free mind, just thinking of living, how to live, how to eat, how to drink, and how to sleep, and how to produce kids. That's all. Only country in this world. And regretfully, we were ruled by British because of this character we are having, this property of ours. We were ruled by Mughals because of this. And before that, many people came like Pandits and Brahmins from other areas like Iraq, Iran, Kurd, Afghanistan, and you can say Turkey. They came and occupied our lands, Mul Nivasis lands, lands of those people who are real belongers to those areas like SC, ST, other backward classes, minorities who are real citizens of this country and others are migrant citizens. Well, now all are citizens, but history has to be checked all times before speaking something. Fact remains that we are a sleeping society and we don't want to come up. We don't want to raise ourselves. And we are a society worth being beaten. We must be punished by others, by external forces, by external people, and by our own. We cannot come out. Our nonsense, our own nonsense. I have seen many videos, many speeches of many people who always talk nonsense. I ask a question to all of you. How many percent people of this country have gone through Bharat ka Samvidhan or constitution of this country? Have you ever got any opportunity even to see that? Or even to open it and read some pages? See at least what is there. See at least what are your rights, what are your duties. None of you except some lawyers or judges or those who are linked with legal affairs. And I'm sure no student has got this knowledge, even if that person is MA, BA, PhD.
engineer, doctor, or whosoever. Top qualified people, and really, it brings top qualified brings shame to this country. I have talked to many doctors, many engineers, many professionals, ordinary graduates. They don't know anything about such. If you don't know system which that governs us, how can you understand your country? Is it wrong question? Just tell me. If you don't know under what rules you are governed, what is your government, what is your position, what is position of government, what is position of law, how can you understand your country? Are you born in this country just to live, eat, and drink and die? If that is your destiny and totally, congratulations to you for that. I'm not conflicting with you. I am trying to educate you people. I am trying to share with you what I know about this country. I'm not expert of anything. Just by general knowledge, just by my virtue of reading something, some immaterial, some material which is important for ours, for our life. Just I want to share that information that I got through. I was also like a layman many decades back. I knew nothing about this country. But circumstances change, person changes and comes to line in proper stream, and you also have to come to line proper stream. You cannot say that we don't have time, we are busy in job. Yes, you shall never find any time until you live in this world. Time is to be shared, it is to be taken out. You read newspapers, you watch television, you go through internet. Now there are many facilities. You are not going to any shopkeeper where shops are, I mean, books are sold, bookseller, and buy this constitutional copy. No, not at all. You watch TV, you watch news, you watch Lok Sabha television, you watch Rajya Sabha television, and you watch so many YouTube videos, and you should have knowledge about this. There are so many papers available, so many information available everywhere. On a script it's available, on slide it's available, everywhere it is available. It's only your interest. You have interest in your family, you are interested in marriage, you are interested in girlfriend and boyfriend, you are interested in games, you are interested in cricket, you are interested in all that. You have interest in all, you have interest in films, you know all film stars, you know cricketers, you know everybody, but you don't know about yourself and your country. And that is a shameful issue. If you even know 10% of your country, you'll be successful. Unfortunately, you have no intention to see about this country. And that is what our leaders get benefit of. Our leaders, whosoever are they, we cannot leave this country to hands of leaders only, because leaders are like us. This is our country. We are just delegating them some power. Take this power from us on our behalf, work. And that power is our vote. And our vote is most precious authority, power that our constitution has bestowed on us. This vote is very valuable. This is not a commodity to be shared and given to anybody else or someone else just to enjoy with this, not at all. This is our power. Each individual's authority and power that is delegated to some representative who has to work on behalf of that delegator, that is voter. Voter is no joke. Everybody's voter, I know. But you have to understand the meaning of vote. And you cannot understand the meaning of vote until you understand the constitution of this country. Vote is not a game. It's not a charity. It's not something, though you take it and go, no, it's not like that. Vote means you have to check them. It doesn't mean once in 5 years you go and just cast your vote and say, I have voted, I have done Matdan. First of all, it is not Matdan. Just remember it. This is not Matdan. This is Matadhikar. This is your right. And you are giving your right to someone to represent you in some forum, whether it's Lok Sabha or assembly or councillor election or municipality or panchayat, whatsoever it may be. You have to value yourself. This is the first lesson you have to learn. When you go to school, you learn A, B, C, D or CAT, CAT, DAT, and or whatever regional language, Tamil or all of that. You learn all that. Only the 1, 2, 3, 4 and all that, you have to learn everything. Similarly, you have to learn about your country. This is your home. This is your gross home, macro home, your micro home, your personal home, your nuclear home is your parent with you, and this is whole parent with you. Leaders can't be relied upon. There's no honesty left with any political leader. There is no moral left with any political leader. Leaders are just looters of this country. Leaders have made this profession rather than service. Leadership, just lead the country. To lead country means a service to country, free of cost and free of any something. But these leaders have made it a profession, a power, and they think it's their belonging, it's their authority. They're born for this. No, they are not born for this. People are born for this. It is innocence of people that they have been making abuse. I am an innocent person, you are innocent, but 132 crore people are innocent. Maybe there are 5 crore corrupt in that, but really majority part of people are innocent,
They just want good nation, they just want developed nation, they just want to live good life, decent life, quality life. But where is quality in life? There's no quality in life. Only few percent of people who are having 72% of the wealth of this country. These few percentage of people, maybe 2%, 3%, 1%, those people are having wealth of this country to extent 70%. They are having enjoying life, enjoyment, entertainment, good quality life, enjoying everything in luxurious way. And those people are actually honor of this country because they have money and they think they can buy somebody else, anybody else. That's the case. Vote is your right. Vote is your power. That constitution has given you. That your country has given you. Your liberty has given you. This power you did not enjoy when you were not your slaves. You were slaves of British and you were slaves of Mughals and you were slaves of others before that. This power you got after thousands of years struggle, and you cannot throw this in dustbin just in the name of some political leader whom you like. No, it's not political leader that is to run this country. It is you. That political leader works for you, and you have to check on him. Forget that who is he. It doesn't matter. You can be leader of this country. Everybody can be leader of this country. Why should you, one man, you take charge of this country? No, one man cannot take charge of this country. There's 132 crore people, and this is indirect democracy, and we all are responsible for whatever actions, whatever decisions are made by these leaders. It is our responsibility. It's not their responsibility, and they are not accountable to someone. Just like a judge is not accountable in any judgment. Similarly, these leaders are not accountable to someone. They will speak lies and they will mislead you, whatever they want to do, and they will do everything in their interest and not in your interest. I'm talking about all leaders, Congress, BJP. It doesn't matter at all. It's our responsibility, it's our problem. If they are corrupt, we are making them corrupt. If they are bad, we are making them bad. If they are good, it's because of us that we are being good. It's we are leaders of this country, and you have to understand that. If you cannot understand that, I can explain you once, twice, thrice, but later on you have to do it. Young, old, seniors, and all citizens of this country must understand that this is a country belonging to us, not to leaders. They are like us. They get opportunity, they come to such ruling positions and enjoy. They are not sitting there for enjoying. No, not at all. They are not supposed to enjoy. They have to live life like we are living. We don't need to get SPG and all these cars and security. For what security is required? We have appointed them. They are our servants. They have to serve us. They are taking money. They are taking salaries. They are taking allowances. They have taken all facilities that are required to be according to law granted to them, and they are enjoying all that. For what specific work they are doing for us? They have to. They are bound to work for us. We are getting salaries. We are getting jobs somewhere. We are supposed to work for that client who appoints us. Similarly, we are clients of these leaders, and they have to understand meaning of vote. Vote is not simply 5 years exercise. It is every day exercise. We have to keep a watch on them, what they are doing. Are they doing in our interest, or they are not doing in our interest? We have to keep a watch on them. We have every right to ask questions to these leaders, whosoever leader may be. Every citizen has a right to ask. Every voter has a right to ask. Because it is our country, it is our money. Everybody is sharing tax, everybody is paying tax, house tax, income tax, wealth tax, all those taxes, GST, etc. Everything is paying, and these taxes are meant for what? These taxes they are using whatever development is to go on because of our money, not because of political leaders' money. It's public tax that makes it. So we have to understand that. You have to keep a degree of belonging to this country, that you belong to this country belongs to that. Until you don't feel ownership, you cannot take responsibility. These people think public has different opinion, different thinking. Public is sleeping, public has been sleeping, and that's why they enjoy. Why we have sleeping only country? We have to learn lesson from Palestine. Yesterday, 2 days before, what happened? They even condemned aid. They condemn finances. Don't spend $50 billion in our country. We don't want this money. We want first our rights. See, this is called a standard of thinking, a standard of condemnation. What power they have got in their minds? They condemned US, they condemned Israel, they condemned all. They said, no, first we want our rights. And us, and we, what we are, we have rights, but we condemn rights. That's the difference. If some country pays us money, we'll be happy, oh, we have got this money because of Modi, or we got this money because of Congress. No, we are not beggars. We are a country that can manage ourselves. We have money, of course we have wealth, and that people is wealth, money is wealth, natural resources wealth, power is wealth, work is wealth, everything is our wealth. But our wealth is sleeping. That's the difference. I am saying sleeping and sleeping and sleeping, and you will ask, why is we are not sleeping? You are not sleeping physically, you are sleeping conscious, inconscious, you are sleeping in minds, you are sleeping in concern.
You don't have these in positive factors. You have no concern for your country. You have no worry for your country. You are not thinking about what's happen in this country, where we are leading to. We are not thinking about that. We are just thinking, oh, I'm having a job. I have got education. I am PhD. I am this and that. I have to make money monthly, and I have to live good life, and that's all. That is your destination. No, it's not your destination. Your destination is different. You are a part of world. You are biggest democracy in this world, number one democracy, and you have to prove that you are democracy. You are not led by these stupid and robbed leaders. Really, I am calling robbed leaders because they rob us. They foolify us. They make us fools. They think we are fools. Of course, we are fools, and we have proven many times. This is an independent nation. We got this independent not because of these leaders. We got independence because whole public. Because the whole public, where Congress was a leader in those days. And this Congress, now, I don't think this is the same Congress which led this country to freedom. Maybe physically they are same party in this Congress, but occupants there, leaders there are different. They are courageous, they are worried for nothing, they are having self-interest, they are having self-approaches, and that's the reason they are not worried. Why I am telling you all this? We are interested in fundamental rights, we are interested in this right and that right, we are not concerned about duties of constitutional duty. What is our constitutional duty? If you go to read Article 51A of Constitution of India, you shall find there's a big explanation about citizens' duties towards nation. You go through them. It's very important. And this says we have to respect our nation, respect our flag, respect our national anthem, respect society, we have to respect our system, we have to respect our future and to make our future develop this nation scientifically in all directions, but we are not doing that. We don't bother about science, we don't bother about technology, we don't bother about system, we don't bother about anything else, we just bother about nonsense. We bother about religion, we bother about tantra, we bother about worship, we bother about namaz, we bother about all those facts, fictions and sects. Are we born for this only? Yes, it is a personal, I know. Religion is a personal matter. But it doesn't mean everything religion is. Religion teaches you something. It gives you something positive. It gives you respect yourself, respect your home, respect your nation, do something for your country, build a nation, build earth. But doesn't say, just think of me. No religion says that. But here, 80% people go to temple and other worship places just for something. Give me God this, give me God this, give me God this. And that's all. And they keep busy in all these things. They waste time in all these things. They don't think how to work. If they spend time in work, they will get success. But they are not doing this. They having dreams. Oh, I get this. I become crorepati in one day. I have this degree. I this diploma. I have got the marriage. I get this and I get that. These are all demanding items. They go to temple and worship this because of that. Well, which is of course personal and not common and not public, but it is a fact of life. So we have to understand what we are doing. It's very important. Nation is big, public is big, problems are big, everything is major here, everything is multi-directional, and we have to control all that. All problems cannot be solved in one day, we understand, but there are no problems that cannot be solved at all. There are problems that can be solved. Problem is, first we have to awaken ourselves, rise to occasion. If we don't rise, we kill ourselves. Just living for sake of living is no life. Just drinking for sake of drinking water is no life. Just eating food for sake of eating is no life. You have to do something. It is your country. Don't think of jumping to skies. Think of gradually moving your country ahead. Because no country is, you can say, no country is isolated in the world these days. All are interconnected. We have to keep with pace. We have to move on pace without keeping safe, without people keeping in the same direction as moving. At the same time, we have to understand that we are not fallen, we don't break our journey, we have no involvement in accidents. We have to escape of accidents, we have to escape of bad effects, and we have to move further. We have to keep moving. And that's what I'm saying. Read Constitution, understand what you are. This Constitution is a book. It's not simply a book of paper bound together. It's a book of intelligence. It's a book of your future. It's a book that you cannot cross that. It's a book that your limits there, your rights are explained, your rights are explained, your duties are explained, your system is explained, political system, you can say executive system, you can say judicial system, you can say general system, public, everything, fundamental right, your constitutional rights, your judiciary, your system, all that, what you are, what is country, what are states, everything is
whether what are elections and what are something else. An election is very important part of our life, because we are electing our representatives. We are not electing our bosses. We are not electing our king. We are not electing someone else. We are electing our people who work for us. That is what we do. It's very important. We elect our servants. We elect our delegates. These MPs, these MLAs, these council, all our delegates. We authorize them to work for us. We do that. It's authority. It's our empowerment by constitution that we vote. And vote doesn't mean forget it. Vote, this word has come from somewhere, and we must know that this is not simply a word. This is a power that you are giving to someone to work on your behalf, for your welfare, for your family welfare, for your state's welfare, for your country welfare, and for whole overall welfare of this country. That means vote is. You cannot just say in 5 years I vote, what can I do now? No, you have to keep watch every day. You have to ask questions, raise questions, be a citizen journalist, be a self-journalist, individual journalist. Forget about journalists, forget about reporters, forget about newspapers, forget television channels, forget about everything. You are yourself a channel, you are yourself a system, yourself everything. Your mind, you can raise questions to President of India, you can raise questions, Supreme Court, you can raise questions to whatever institution exists in this country. You have an absolute right to that, and you do it. Why do you hide? Why do you hesitate? What problem is there? You are educated class, you have every right to ask questions. You can send questions by writing. You can raise questions in any media. You do whatever you want. It's up to you. You act as an active citizen of this country. Learn lessons from Palestine. Learn lessons from Venezuela. Learn lessons from Turkey. Learn lessons from other countries like Sudan, Algeria. Learn lessons from Indonesia. Learn lessons from everywhere. There are examples, though we have to teach them, but indirectly we are not even existing in a professional manner, in an expertise manner. How can we teach them? Of course, indeed, we are biggest country in democracy. We are number one, but I think we are number last, because we are sleeping, and those who sleep, sleep. Most of us sleep. We don't care. All professionals who are responsible for this country in medical science, in engineering science, in other sciences, and other fields, they are all sleeping. They are living for themselves. They are not concerned about this country, not at all. Hardly even 1% are not concerned. And that is setback to this country. This is a country, they all leaders, these political leaders, they are all crooks to some extent, all. A to Z, 1 to 100, all are crooks. And know very well that our people are sleeping. They know it very well, but they are not sleeping. They are doing what they intend to do. They are doing to their requirements. They are meeting their requirements by whatever method they understand. They do it. Why I am talking all this? Because this is facts of life. We have to understand that these leaders are temporary. They come just for 5 years, 6 years, 4 years to these positions. Then they have to go. But they have made this position as their fundamental right. They don't even have courage. You see, Rajiv Gandhi showed courage about reservation to women in panchayat for 33%. Later on, they are raised by Congress for 50%. And these parliamentarians don't have any courage to bring 33% reservation for women in assemblies and parliament, Lok Sabha and Rajya Sabha, but they could not do that because they are afraid. This is their job. This is employment. If they give this employment to women, they have to lose. That's the problem. These are courageous people, just like they are courageous people. They are courageous representatives. They are thieves, they are robbers, they are criminals. Evidence is, if you see current Lok Sabha, which is of course based on EVM, and I consider this Lok Sabha as fake, illegal, unconstitutional. Of course, it has been signed by election commissioner, and president has undertaken oath, has administered oath to prime minister and all ministers. Even then, as a public member, as a member of this sound public, I consider myself not sleeping. Maybe you're all sleeping, and there may be thousands and lakhs of people like me in same stream that think that they are not sleeping, they are active. But those who are sleeping must come up. See, your country is not bought by Modi or by Rahul or someone else. It's your country. Don't depend on someone. Yes, they are your servants, they have to work for you, but you cannot depend upon them. You have to check them what they are doing. You have to check them where money is going out. You see, our companies are being sold. Those companies who were initiated and gradually promoted by Congress resign with public money is being sold like anything. Is the way the government should do? You think so? A government is that which makes a company better rather than selling it. Work hard. Work hard for that company. If it is sleeping company, if it is dead company, try to get it up and do it in a national interest. Why do you sell?
is selling a solution. This means you are selling something which made by other one. You have thrown money on by your father and your name kept from the will and you are throwing it out. Is that right approach? You just think on that. Yes, there are cases where something cannot be recovered. You may say, okay, this is now that is scrap. It will be written off from our and then sale it some just like kabara, rubbish. But this is not rubbish. Our nation is not rubbish. Our companies are not rubbish. They have been made rubbish by politicians, by looters, and this is what's happening. If you cannot even maintain red foods, like you cannot maintain your Qutub Minar, you cannot maintain your Taj Mahal, what right you have got to be in government? Just think on. If I am in government, if I have been given responsibility by people, I am people's representative, what right have I got to condemn whatever happened in past? That is nonsense. I have no right at all. A person is good if he keeps moving good things. A person is bad if he keeps moving bad things. We have to understand that. You have to understand that. I'm not preaching something. It is your country, your constitution. You are not a good citizen if you cannot even know what constitution states. I have some kids here from my sister. One boy, one girl, both are educated. They didn't know about constitution. When I talked to them, I gave them a copy of constitution to read. They did not even read. One started reading something. So it is too difficult. I cannot understand this. This happens. You can understand cricket. You can understand football. You can understand film stars histories. You can understand everything. You can understand good or bad, but you cannot understand about constitution of this country. This is unfortunate. You can understand your geometry, your trigonometry, your mathematics, your physics, chemistry, everything. You cannot understand simple your Constitution of India, which is not even having any mathematical, numerical, any physical atomic structure or something else, a chemical equation or differential calculus, nothing in that. Simply English, or even if you don't understand, you can go through Hindi copy or regional language copy, but you shall not do that because you don't have time for that. Those you don't have time for that, how can you say that you will not understand the country? You should take some hours from your life and go through some at least your related laws, your related provisions. For example, what happened, what is the name of this country, what is the state definition, what is parliament, what is Lok Sabha, what is Rajya Sabha, what is election commission, what is your right, fundamental right, what is your fundamental duty, what should be done, what should not be done, and how many articles are there in constitution, why Indian Independence Act was repealed, what happened that time. At least this you must see. There are some laws which have been coming pre-independence. What are those laws? Why they are there? What is the title of those existing laws? Is there something else there? If you cannot even know this there was a subject previously known as civics, Nagarik Shastra. We used to do that about a brief of this was given. But you have no question of that. You can understand yourself. Yourself teach yourself. Teaching is the best one. If you have no time at all, I don't understand what to do about that. You have time only for vote, you go for vote and give the name of someone and you don't understand what for your. There are so many people who don't even understand what MP means. Oh, somebody talking about MP and Lok Sabha constituency, they say, oh, this is my road is not clear, my street is not clear, I have no light, I have no water in that. Now just tell me, is it in jurisdiction of MP or Parliament to give you water, to give you light, to give you street for paving? Is that? You must know that. Is it the state government right, it's municipal right, or it is MP right? Whose right is that? If you cannot even analyze this, you cannot even understand this society, that then how on the basis of saying citizen of this country? If you don't, when you are in a home, you are all member of your family. Do you know about family or not? Do you know about how your family moves, how your rules move in family, how your family conduct, how they manage in this society, and how they manage in trade? Don't you understand that? Same thing applies to a nation. You are a product of this nation. You are owner of this nation. You have to understand that. If you cannot understand your country, how shall you understand others' countries? You can never understand. And you will act like illiterate person, innocent person who know nothing about your country, and that is really shameful. Once I was in Doha, sometimes long back, in '86 or '85, something like this. I was talking to some British guy who was a consultant. In one talk, in one issue, we discussed about our political system in our country, and he said that there was some question, some deliberation on our freedom and our freedom struggle, and when they left our country, this British, he said, no, you are not clear about this. You know what they are taught in their country, you see, they are taught that
Our people, means Bharat people or India people, required British government there to provide services of governance because our country could not govern ourselves in a professional manner. This is what that British told me. They said, no, you are thrown out of our country. You are moved from our country. No, 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 no. When you said that we don't need your governing services, we left. That's all. Shall you agree with this? But this man told me. And I told him also about our president and their queen. I told him, see, we have power as Bharat country, as Indian system, that our people, our parliament can impeach even president to remove from institution of presidency. But you in England, UK cannot remove your queen or king. So who is bigger, who is superior? We are superior because we have power to remove from office our presidency, which is equivalent to queen or king in British regime. Means such type of talks we used to discuss, which is very. So those people understand that we invited them to govern them. This is consolidation of mind as given in books in that country. And what we are given? We are given here something which you don't understand. Have you ever thought of how could we allow these people to come to our country and start ruling on us? Have you ever thought of what was what reason was that someone started to think that these people should go out? Have you ever thought of that? You never thought of that. And you don't want to even think of that because why to take stress for nothing? It's not history. It's not something like that. It is suppression of people. We allow them to suppress us. And this happened. Have you ever thought of that? You will never think of that because you are not interested in your country. You are interested just to live here, enjoy here, take education, obtain education, find jobs in US or somewhere and go there and settle there. That is your ambition and nothing else. But forget that destination also now because US has weakened, England has you can say like ended, and there is no other country that can absorb you. GCC countries and Middle East countries are over. They don't have jobs for expatriates. So you have to stay in this country in general. You cannot go. You have to stay here. You have to work here. You have to merge here. You have to work for this country. You have to think for this country. Otherwise, you are not a human being. Why I am stressing on this today? There are reasons, very, very reasons. We are now standing on a constitutional crossroad. Constitutional crossroad means we are having constitution of this country. We have reached a crossing where one route goes to heaven, one route goes to hell, and one route goes to unknown location. Where to we should go? Certainly, everybody shall opt to go to heaven, and nobody shall like to go to hell, and no one will like to go to unknown destination. But you have to go somewhere. Every entry is not allowed into heaven, and only selected entries are allowed into hell. So where shall you go? You have to contemplate on this from now onwards, because there are people in power, in governance, who are those who never cared for freedom of this movement from this country. They were never involved in those times when we expected whole society to join freedom struggle. They did not do any degree of contribution into that struggle, and they have, by luck or by whatever illegal or legal means, by who can say hooks or crooks, they have come into power, and we brought them to power with pride without even thinking how they have come there. Well, they have come there, I understand. They cannot go without vote out, I understand. But we have to be careful about that. We have only one right to vote to elect a member of parliament or MLA. We know they are not permanent, but they can break constitution, they can deteriorate constitution, they can dilute various article provisions,
They can do whatever extent they can go to. They can think anything which we cannot think. Their mind starts when our minds stop thinking. This is intellectual of those crooked people. All politicians are crooked. If they are not crooked, how could we get 233 history people in our Lok Sabha, which is an evident example to prove that all people are crooked? If 233 MPs out of 542 MPs are in Lok Sabha power, we can imagine fate of this country, because this house makes laws. This house controls whole nation as a federal structure. This house has a lot of powers which no one has. And these people are the who must be in jail or in Lok Sabha. What to expect from them? What to expect them to do for us? You can very well understand. And it is you who sent them there, none else. It is your responsibility. It is your obligation. You sent them. And now, even you did not know at that time that you have to vote criminals, but you voted for criminals. Because you did not vote for MP, you voted for someone who is head of those criminals. Head of those criminals means what? You understand very well. I don't need explanation. You voted them or you did not vote them, but they have come to power. I am dead against EVM now. It's not because of my personal choice. It's because this is manageable equipment, electronic equipment that can be managed by hardware, by software, by whatever means. I'm not electronical engineer. I'm not IT engineer. But whatever information I gathered by scrutiny, by survey, by research, it tells that EVM is a criminal equipment. It can be used positively and negatively both. But who shall use it positively? Foolish shall use it positively. Votes can be transferred, votes can be swayed, vote replacement of machines can be made. It is very clear. And I yesterday also told you, and again I am telling you, I have written to President of India, I have written to Chief Justice Supreme Court, I have written to Election Commission about I don't accept this, about my not accepting this because of various reasons, and there are three practical reasons. Number one reason was loss of 20 lakh equipments EVMs, non-inventory list of 3 lakhs machines. There's no inventory at all, and whatever inventory doesn't match, and also 373 constituencies vote results do not match. These three are very big reasons, logical reasons, evidently reasons that should be and must be considered by every sensible citizen of this country from youth to veteran range. We have to. I don't say that I don't want Modi or Rahul or someone else or someone else or someone else. No, that is not my ambition. Modi can be there, someone else can be there. It depends upon public. But public must be sure and sure that genuine votes have been cast. It doesn't matter my vote if I give to this party and goes to some other party. How can you call it genuine voting? There is no meaning left when I vote to someone and this is not counted in that person's account, it's counted someone else, or whose whole machines are replaced by some crook system working behind scenes, by illegitimate system working behind scenes. If this happens, what should I do? My meaning of vote is negative. It's no meaning at all because my vote has gone astray. It has been thrown away. So why I should vote in that case? There is no foolproof method of EVM. All countries, super countries, developed countries who used previously for voting system EVMs are now doing ballot papers. USA example, Russia example, Pakistan example, German example, extra few extraordinary countries like Venezuela, like you may say some other country, Nigeria, etc. is a very few. We still have this system, but we cannot compare our nation to these nations. We have to make sure that my vote must go to a person, to that candidate in whose favor I do vote. If I do vote,
and doesn't go to that person's favor, what does it mean then? If persons like Modi and Amit Shah and this election commission, this triangle acts in a different way, and my votes are robbed by replacing these machines of election polling by preloaded machines, or by some other method, my votes are swapped here or there. If it happens, then how these three people worked against me as voter must be understood. My vote is not for stealing. My vote is not for stealing at all. It is for work of voting. It is for a system to work, but it didn't work. Why a regime is fearful of ballots? Why election commission is fearful of ballot? And why Honorable Supreme Court is not giving judgment, did not give judgment in favor of ballot papers? This triangle is very important to understand, and even the collusion of Supreme Court in action comes into picture. So we have to be careful. If Supreme Court doesn't act, if Election Commission doesn't act, if Executive doesn't act, what shall happen to democracy of Bharat? How shall we maintain democracy? And if democracy is endangered, public is endangered, there shall be negative consequences after that. People are not happy because people are not sure of votes. Why people run away from ballots? Why leaders run away from ballots? Why they don't raise? Congress has not acted in any way that it should have acted. Others possibly failed to act in a way they should have acted. They are silent as if nothing happened. It's really very bad. Congress party at least should have spoken. They should have come. They may say they don't have evidence. What evidence do you want? 20 lakh machines are absenting or missing. Is it not an evident factor? 3 lakhs inventory numbers were not available. Is it not a factor? Difference in input and output votes are there ranging from 8,000 to 18,000. Is it not a factor? What else do you want to understand? Circumstantial evidences, other evidences are available, and we say there is no evidence. How? We have to understand that votes are not allowed to be robbed, which has been robbed. And again, I'm challenging to Prime Minister, being Prime Minister, I'm challenging to Election Commission. Okay, face ballots and then win. You will know your face, your value. You are winning, jumping on, thumping on because of EVMs. You know that this can be managed. And why alone you accept EVMs and others reject EVM? Are you only party in this country? Are you only exclusive king of this country? When no one wants EVMs, why Election Commission is adamant? Why BJP is adamant? Why fake PM, EVM, PM is adamant? Why? This means they have got some hidden interest with them. Election Commission has some interest. BJP has some interest. EVM, PM has some interest. Everybody are in interest, are having interest to abuse both EVMs. And that is the reason they are not accepting replacement of EVMs by ballots. Public demand is very important. Public is thinking, but public's bloods are cold. They are not crying out. They are not coming on roads, unfortunately. They are not thinking for the future of this country. They are thinking, whatever happens now is okay, no problem. Elections are over for them, not for me, not for whole people. We are serious people. Election Commission has to understand this. Oh, EVM is a disease, it's an epidemic. It's a disease that cannot treat with no injection at all. Only injection is take it off, throw it off, crush it. And it shall happen one day. We have to crush EVM. We have to come back to balance. It doesn't make a difference if it takes 2-3 days for counting of votes. What difference does it make? At least truth shall exist. Satya, truth shall exist. Survive, not false. This was a drama election in 2019 Lok Sabha. This was an eyewash election, an eyewash. This was a painting only. No reality, no facts, no morality, no characters left with anyone in 2019 election. Everybody should be awakened. Why are you sleeping? Don't you think this is your country?
Why are you killing future of new generation? If you don't understand anything, how shall future generation understand themselves? At least you have access to books, you have access to something, you have access to interaction. Future generation got attraction to nothing except mobile and earphones, ear watching, listening to or listening to songs and videos and all that. My dear friends, I'm not discouraging you. I'm just encouraging you to think for this country, to think for our system, to think for future, to think for your kids, to think for our nation again. This election, which has been a fake one, a fraudulent one, must be rejected. This is my demand, my request. This must be rejected, and ballot election must be done so that real representatives reach parliament and not whoever reach their good or bad. We don't want 233 criminals in Lok Sabha. This is not really religious Lok Sabha. This is not really constitutional Lok Sabha. This is criminals Lok Sabha, house of criminals, where 45% MPs are criminals or equivalent to criminals or accused. We can call that house as house of criminals, house of accused. There's nothing wrong in that, in this contemplation. They are, because they are as such, we are naming this as that. They must understand that they are not God. They are not everything. They have done crime means they have to get clean hands and then come to Lok Sabha. It doesn't matter. You may say that they have not been sentenced yet. Okay, they have not been sentenced. But what is hurry or what was hurry that they should come to Lok Sabha? Let them wait. Let them wait till adjudication comes in their favor. Why should they come to Lok Sabha themselves, even if political parties nominate them? They should have refused straight away, but they did not refuse because they are happy to come in power. They are happy to share power and loot money from banks and somewhere else, or incorporate with that, or help them other people to loot money. Is it wrong? Is it wrong? Tell me. If you talk of this, and please don't say that I am talking in a baseless way or directionless way. It's all fact of life. Read Constitution and then understand. Constitutional RP never says RP means People's Representatives PR or People Representatives Act or Representatives People Act. It never mandates the elections must be made by EVMs use. It mandates that ballot must be used except with some locations or some constituencies where there's some problem and their EVMs must be used. That is a rare case, maybe 2, 3, 5, or 10, or maybe 1 or 2, 5% constituencies, but not 100% areas all over this country. This is really shameful that these leaders have cheated massive public, massive strength, 130 crore people, 95 crore voters, been cheated by these leaders, by these political leaders. We call them political bosses. They never think of country. They think of only themselves. They never care of country. Even hundreds of kids die due to some bimari, some disease in Bihar or Gautam or UP or survival. They have no time to talk about that. No, they will not talk. Prime Minister is more interested in cricket. They're more interested in something else. He's not interested in poor because they want to let poor die, no problem. As many as poor die is better for this country. They think so. Those people, though they are poor, but they belong to this country. So why we should not care about them? If one cricketer damaged, injured, Prime Minister tweets, what is shameful? You have no time for someone who is killed by someone else. We are using name of Ram in this affair, in this bad act. Shall Ram accept such conduct? Ram will never accept such conduct because this is bad conduct. This is polluted conduct. We have no right to say something like that. You have to awaken. You have to read Constitution. You have to read this. You have to understand where you are. You have to understand what government is. You have to understand what MP is. You have to do it.
I'm not suggesting, I'm just advising. Do it. Take some time of your life, do it. Understand how our system works, how it works, and where we do stand. Or else, these people, these politicians shall kill your mind, kill your conscience, and you will just keep voting them forever, and they will just be staying in power forever. They do nothing for you, and you feel happy, you clap with everything. Oh, Modi hai to mumkin hai, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो वोट की लूट है, मोदी है तो बच्चे मरते हैं, मोदी है तो श्री राम में नाम में मारे जाते हैं, मोदी है तो संभव है. Yes, you may say that, because these are professional politicians who just want to make money. They charge billions and billions of donations from industrialists, and they help them post election, and this is what they have done. They are allowing undue profits to these riches and not the poor. This is an unfortunate time for this country. I don't know, had those father of nation and all those struggles like Subhash and all those present now, what they would have thought about this country is the same country as they belong to that those days. They have think that way. मैं क्या बताऊं आपको, आप दोस्तों को, बहुत सोते रहते हो, कभी जागा भी करो. ये देश हमारा है, अंग्रेजों का नहीं. ये देश हमारा है, बीजेपी का नहीं. ये देश हमारा है, कांग्रेस का नहीं. ये देश जनता का है, भारत के पब्लिक का है, भारत के आवाम का है. जो लोग नाम नहीं जानते इस देश का, उनसे मैं क्या बात करूं. शर्म आती है उन लोगों को जब शोर से कहते हैं जय हिंदुस्तान, जबकि हिंदुस्तान नहीं है, ये भारत है. उनको बिल्कुल, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, लीडर्स हो, जो भी हो, स्ट्रगलर्स हो, हिंदुस्तान के उनकी जबान पे आता है जब हिंदुस्तान नाम नहीं है मेरे भारत का. हिंदुस्तान नाम नहीं है मेरे भारत का. मेरा भारत है, भारत, भारत वर्ष है ये, भारत भाग्य विधाता है ये. यहाँ हिंदुस्तान की जगह नहीं है. नेम संविधान में लिखा है, नाम लिखा है संविधान में, भारत, इंडिया, गणराज्य भारत, भारत गणराज्य, रिपब्लिक ऑफ इंडिया. रिपब्लिक का मतलब भी नहीं समझते लोग, बड़ा दुख होता है. पर कौन बार बार समझाए उनको. जिनको शौक नहीं समझने का, कुछ करने का, उनको कोई समझा नहीं सकता. हम सोते रहेंगे, राजनीति वाले मजे मारते रहेंगे. पक्के हम हैं, कच्चे वो हैं. 5 साल के लिए आते हैं, लेकिन सब कुछ लूट के ले जाते हैं. फिर 5 साल बाद आते हैं, हमारे वोट को लूट के छीन के ले जाते हैं, और हम देखते रह जाते हैं. हमने कहा जी हमने बीजेपी को वोट दिया, किसी ने कहा हमने कांग्रेस को वोट दिया, किसी ने हमने कुछ कहा और किसी ने कुछ कहा. ये कोई नहीं कहता कि मैंने अपने देश के इंटरेस्ट में वोट दिया. मैंने इसलिए वोट दिया कि मैं चाहता हूँ मेरा नौकर जो मेरा एमपी होगा या मेरा एमएलए होगा, मेरे लिए काम करे, मेरे देश के लिए काम करे, मेरे राज्य के समाज के लिए काम करे. ऐसा नहीं सोचते हम संविधान नहीं पढ़ते, ना पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हम समझना चाहते ही नहीं है. हम चाहते हैं कि हमें बता दे कि आप किधर जाना है, हम चलते रहेंगे वहाँ. जब इंसान अपने आप को करना छोड़ देता है तो उसका भगवान भी साथ नहीं देता है, याद रख लेना. Those who help themselves, God helps them. Otherwise God never helps. God is not your servant. आपका नौकर नहीं है भगवान, जो आपको आएगा कहेगा देखो सूरज तुम ये करो, चंद्रमा तुम ये करो. आप करोगे तो भगवान शक्ति अवश्य देगा करने के लिए, लेकिन आप गुलाम नहीं है भगवान. आपको भगवान की दया चाहिए, भगवान को आपकी दया नहीं चाहिए. आप श्री राम बोले ना बोले, या श्री राम बोले ना बोले, आप कुछ भी करें ना करें, भगवान आपके लिए इंटरेस्ट नहीं रखता कि आप मेरा नाम लो या मेरी पूजा करो. भगवान को इस बात से कोई इंटरेस्ट नहीं है. अब हमें इंटरेस्ट होना चाहिए कि हमें अपने देश को कैसे आगे बढ़ाना है. हमारा देश जो हम सबका है, हमको इसे कहाँ ले जाना है, हम किस रास्ते में जा रहे हैं, हमको समझना होगा. कि हम वोट देने के लिए पैदा होते हैं, कभी बीजेपी को दे दें या कांग्रेस को दे दें, क्यों दे दें, प्रश्न उठना चाहिए. आखिर हमारा अधिकार है वोट का. कोई हमारे को फोर्स नहीं कर सकता कि मुझे दीजिए, हमारी जिसको मर्जी होगी देंगे. लेकिन ऐसा माहौल बन गया है, नहीं जी हमको तो इसको देना है या उसको देना है. यही कमी होती है देश में, जब बंधन बन जाए, जब गुलामी की सोच हो जाए. आज वही हो रहा है. हम या तो मोदी की तरफ भागते हैं या किसी और की तरफ भागते हैं, जबकि हम नहीं जानते कि कोई भी इनमें से ठीक नहीं है. ये जैसे साधु बाबा होते हैं, रेप करके चल दिए, थाने में बैठे हैं आज, जिनके भक्त आज प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं. ऐसे ऐसे लोग, ये भी बाबा ही हैं, मौनी बाबा हैं. अपनी दुनिया से मतलब, वोट ले लो, बात खत्म, जीत गए. क्या करना है पब्लिक से, पब्लिक जाए भाड़ में, बच्चे जाए मर जाए अस्पताल में, ऑक्सीजन ना मिले या उनको इलाज ना मिले, क्या फर्क पड़ने वाला है इस बात से. कोई किसी को श्री राम के नाम पे मार दे, कोई कुछ भी कर दे, हमें क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है. माफी मांग लेंगे, ट्वीट कर देंगे. इनको ज्यादा चिंता क्रिकेट की होती है, देश के बच्चे को मरने की नहीं होती है.
इनको क्रिकेट की चिंता ज्यादा होती है, फुटबॉल की चिंता ज्यादा होती है, देश में कितने लोगों की प्रॉब्लम उसकी चिंता नहीं होती, कितने ने रोटी खाई कि नहीं खाई। ये है देश हमारा भारत, जिसको हम कहते हैं भारत भाग्य विधाता। ऐसा ही भाग्य विधाते हैं हम ऐसे ही भाग्य विधाते हैं, सोते रहते हैं। हमें अपने से मतलब, अपनी रोटी से मतलब, अपनी गाड़ी से मतलब, अपने बच्चों से मतलब, अपने परिवार से मतलब, भाड़ में जाए देश, क्या लेना देना है। एक बार आएगा शोर मचा देंगे भारत माता की जय और वंदे मातरम क्या कि हमारी दूरी खत्म हो जाती है, हमें शर्म आती है इस बात से। भारत माता की जय क्या कि आगे चलते बने क्यों हो जाएगा काम, कैसे हो जाएगा काम। बेवकूफ थे वो लोग जिन्होंने आजादी दिलवाई हमको, शायद ऐसा लगता है आज। अगर वो लोग जमीन पे आ जाए तो सोचे कि वो कहाँ है, उस देश में नहीं होंगे जो देश वो उन्होंने आजाद कराया था, वो देश कहीं और चला गया है, वो भी जानते कहाँ चला गया है। हम इतने अनपढ़ गंवार बन चुके हैं, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी, बड़ी बड़ी डिग्री हासिल करने के बाद भी, प्रोफेसर बनने के बाद भी, लेक्चरर, डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बाद भी, कि अपने देश के बारे में हम नहीं सोच सकते। कितनी दुख की बात है, लाखों जिस देश में इंजीनियर हो, लाखों डॉक्टर, लाखों वकील, सब कुछ हो, वो अपने देश के बारे में नहीं सोचते। सरकारी को कहते हैं सोचे, अपने आप नहीं सोचेंगे हम। अरे ये तो सरकारी हमारे नौकर है, प्राइम मिनिस्टर हमारा नौकर, राष्ट्रपति हमारा नौकर, सारे हमारे पब्लिक सर्विस है, हमारे पैसों से, हमारे टैक्स से सैलरी लेते हैं, अपने जीवन करते हैं और हमारे ऊपर राज करते हैं। अपनी राज हमें इनके ऊपर करना चाहिए। पब्लिक बोले और प्राइम मिनिस्टर ना करे, हो नहीं सकता। पब्लिक बोले राष्ट्रपति ना करे, हो नहीं सकता। ये कैसे संभव है? हम इनके बाप हैं, हम इनके राजा हैं, हम पब्लिक हैं, हम रिपब्लिक हैं। रिपब्लिक का मतलब होता है जो पहले राजा बैठा था उसी जगह पब्लिक आके बैठ गई तो पब्लिक राजा है। और ये हमारे नौकर, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर, चाहे राष्ट्रपति, कोई भी क्यों ना हो, ये हमारी बात नहीं सुनना चाहते। पर हमें कहना होगा, हमें जाग कर कहना होगा। हम सोते रहेंगे तो सोते रहेंगे, या हमारे पानी डालते रहेंगे, हमें नशा और देते रहेंगे और इंजेक्शन लगाते रहेंगे कि आप सोते रहिए और हमें राज करने दीजिए। हम सोते नहीं क्या? हम सोचे नहीं क्या? संविधान क्या कहता है, हमारे अधिकार क्या कहते हैं, हमारे कर्तव्य क्या कहते हैं? बात को समझे कि नहीं समझे? कौन समझाएगा हमको? आगे इंग्लैंड समझाएगा या अमेरिका समझाएगा? ये समझने की बात है कि नहीं? आपको सोचना चाहिए। हमें शर्म आती है देश के पढ़े लिखे लोगों के ऊपर जो समझना नहीं चाहते, संविधान को जानते नहीं, संविधान का नाम नहीं जानते, भारत देश का नाम नहीं जानते और देखते भी नहीं कि क्या लिखा है संविधान में, हमारे फर्ज क्या है, हमारे काम क्या, हमको क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो हमें कौन बताएगा आगे? क्या कृष्ण उतरेगा, राम उतरेगा, कोई और उतरेगा बताने के लिए? क्या संविधान में क्या लिखा है? हम संविधान की वैल्यू क्यों नहीं देना चाहते? क्या ये देश है कब तक चलता रहेगा ऐसे ही? हमें मोदी कब तक बेवकूफ बनाता रहेगा? और कोई राजनीति तो क्यों बेवकूफ बनाते हैं? कब तक बेवकूफ बनाते रहेंगे? हमें झूठे वादे कर करके आगे चलते रहेंगे। 5 साल बर्बाद ऐसे ही कर दिए झूठे वादों के, और आगे भी ये चलते रहेंगे ऐसे ही, और चलता रहेगा ऐसे ही। हम बेवकूफ है क्या? गवार है क्या? हम भीख मांगते क्या? सब कुछ होते हैं। अरे मेहनत करते हैं, हमारे दाने नहीं, आप धर्मात्मा नहीं, आप कुछ नहीं, आप देश के प्रधानमंत्री, तो काम को प्रधानमंत्री का आपके बस का नहीं, आप छोड़ चले जाइए। आप यही इनकी चोरी करके वोट छीन लेते हैं हमारे, और दूसरी पार्टियां हार जाती है, बोलती नहीं, शर्म आती है इस बात पे कि आपके अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि आप वोट करा सके बैलेट पेपर से, और आप बातें बड़ी बड़ी करते हैं। हम नया भारत बनाएंगे। वो कौन सा नया भारत होता है? कैसा नया भारत होता है जहाँ किसी को मार दिया जाता है जैसे राम के नाम पर बोलने पे, जहाँ बच्चे मर जाते हैं बिना दवाई के इलाज करने पे? ऐसे भारत बनाना चाहते हैं आप, जहाँ नौकरी नहीं है युवा के पास, जहाँ काम नहीं है किसी के पास, जहाँ किसान मर रहा है, जहाँ गरीब मर रहा है? आप ऐसे भारत बनाना चाहते हैं? हमारे ऊपर अरबों रुपए का खर्च है, आप ऐसा भारत बनाना चाहते हैं? क्या है वो नया भारत आपका? आपको अपने से मतलब, बस आपकी सीट पक्की रहनी चाहिए, भाड़ में जाए सब कुछ। हमें ऐसे नेता नहीं चाहिए। हमें नेता चाहिए जो सामने खड़ा होकर बात करेगी, देखिए आपके प्रश्न का उत्तर ये है। हमें डरपोक नेता नहीं चाहिए जो बैलेट पेपर से भागता हो। हमें ऐसा नेता नहीं चाहिए जो पब्लिक की बात का जवाब ना देता हो। हमें ऐसे जर्नलिस्ट नहीं चाहिए जो क्वेश्चन पूछने डरते हो। हमें लोग फ्रैंक चाहिए, पावरफुल लोग चाहिए देश को आगे बढ़ाने के लिए। अरे हम वो देश है जिन्होंने ब्रिटिशों को भगाया है, हम वो देश हैं। हमारे पास शक्ति थी, सोच थी, विल पावर थी तो भगाया गया। गांधी अकेला चला था, सुभाष भी अकेला चला था, सब अकेले चले थे, लेकिन आगे कारवा बनता गया, लोग चलते गए, क्योंकि लोगों को लीडर की आवश्यकता है। आज की तारीख में सारे लीडर मर चुके हैं। जो लीडर बैठे हैं वो क्रूड हैं। ऐसे लीडर जो 232 हेराफेरी करने वाले को, चोरों को, डकैतों को, बदमाशों को, आतंकवादियों को लोकसभा में लेकर आ गए। हम तो ऐसे नेता है, शर्म आती है कांग्रेस को जैसी पार्टी कहते हुए, जो डरपोक बन चुकी है, मेंढक बन चुकी है, जो चूहा बन चुकी है, भाग गई आईसीयू में, कहाँ चली गई पता नहीं, जो लड़ नहीं सकती सड़क पे आकर की वोटों की चोरी ईवीएम की बात नहीं करती है। अरे क्या चाहिए आपको? 20 लाख मशीनें गायब है, आपको पता नहीं लगता? आपको पता नहीं लगता कि 3 लाख मशीनों की हेरफेरी हुई है? आपको पता नहीं लगता 373 कॉन्स्टिट्यूशन में वोटों की हेरफेरी हो रही है? आप क्या चाहते हैं सबूत? आप लड़ते क्यों नहीं? सरकार से हेराफेरी के पावर में आई है। अरे आप पावर में आए, सच बात है, आप आए हैं तो वोट से आए, आप बैलेट पेपर से आए, सच्चाई के बेस पे लड़के आए। पब्लिक को आपने क्या किया, क्या नहीं, उसको बता के आए, आपके मैनिफेस्टो में क्या कहा था, क्या नहीं कहा था, उसके बाद का जवाब दे के आए। लेकिन आप ये सब नहीं करेंगे। आपको पावर में आना था भाई, वो गलत काम करके आना था, साम दाम दंड भेद करके आना था, जैसे भी आना था आप आ गए। बस आपको क्या लेना देना? पब्लिक वाले भारत में, देश वाले झाड़ में मैं रहना चाहिए बस। मैं बकरा जिस तरह बोलता है, ये मैं नहीं चलेगा इस देश में। हम चलेगा, ये सारे राज्य चलेंगे इस देश में, सारे धर्म चलेंगे इस देश में, सारी पब्लिक चलेगी, हर क्लास की पब्लिक चलेगी। हम ये नहीं चाहते कि कुछ परसेंटेज लोग हम शक्ति हो, ब्राह्मणवाद चलता रहे। ब्राह्मणवाद की जगह इस देश में नहीं है। ये भारत है, यहाँ कोई धर्म नहीं चलेगा। ये भारत है, भारत 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 भारत, बस। कोई हिंदुस्तान नहीं चलेगा यहाँ पे। जो हिंदुस्तान की बात करेगा उसको लात मारी जाएगी, क्योंकि हिंदुस्तान नहीं है, ये भारत है।
हिंदुस्तान के नाम से नफरत को, मुगलों का दिया नाम हम कभी नहीं मानेंगे, और अंग्रेजों को दिए को नाम हम मजबूरी है कि हमारे संविधान में लिखकर इसलिए मानते हैं, नहीं तो हम इंडिया को भी ना माने। ये देश भारत है, हिंदुस्तान नहीं होगा। जो हिंदुस्तान होगा वो मूवी खाएगा, लात खाएगा, जूते खाएगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। आप देश का नाम गलत नहीं दे सकते, ये अधिकार आपको नहीं है लेने का। आप मेरे देश का नाम भारत है तो आपको भारत बोलना पड़ेगा। आप हिंदुस्तान बोलेंगे तो आपकी कुटाई हो जाएगी, याद रख लेना। चाहे कोई भी नेता हो, कोई भी सिटीजन क्यों ना हो, गलत फहमी के शिकार मत रहना। जो देश का नाम है वही रहेगा। भारत के संविधान की इज्जत आपको करनी होगी, नहीं करोगे तो भारत के संविधान आपकी टांग पैर हाथ तोड़ सकता है, आपको सीट से उठा के भाग सकता है, फेंक सकता है, तोड़ सकता है, कोई भी आप क्यों ना हो। अगर आप इस बात को नहीं समझते, आप समझते कि ईवीएम आपको जिताती रहेगी, तो भूल जाइए इस चीज को। ईवीएम को भी तोड़ दिया जाएगा, ईवीएम का भी सत्यानाश कर दिया जाएगा। जब पब्लिक का गुस्सा आता है तो आप जानते नहीं क्या होता है। अरे बड़े बड़े क्रांति आई के देशों में जाके देखिए, यहाँ भी आ सकती है। जब तक पब्लिक सो रही है, इस पब्लिक को जगाना मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब ये पब्लिक जाग जाएगी तो अंग्रेज भी भाग गए थे यहाँ से। मुगलों ने भी यहाँ एग्रीमेंट किए थे पंडितों से, ब्राह्मणों से, क्योंकि दूसरों से तो एग्रीमेंट नहीं कर पाए थे। सब राजाओं ने फैसले किए थे उस टाइम कि मुगलों के साथ मिलकर हेराफेरी की थी, और आज वही लोग पावर में उनके साथ हैं। कितने राजाओं ने मुगलों को अपनी लड़कियां दी थी, आपको मालूम नहीं है? क्यों दी थी? कि शांति से रहना चाहते थे। किसने हरिजन को लड़की नहीं दी थी अपनी? किसी ने लड़के हरिजन से शादी नहीं की थी? किससे की थी? बड़े लोगों से, पंडितों से। ब्राह्मणवाद जिसको कहा जाता है आज की तारीख में, वो ब्राह्मणवाद जो उस देश का दुश्मन है। इस देश के 3.5% ब्राह्मण राज कर रहे हैं इस देश पे। ऐसे लोगों पे जो गरीब हैं, जो बर्बाद हैं, जिनके पास जमीनें नहीं हैं, जिनको आप नक्सली कह देते हैं, जिनको आप हरिजन कह देते हैं, जिनको आप कुछ भी कह देते हैं, मुस्लिम कह देते हैं, अरे वो तो पहले ही पिछड़े हैं। वो आपसे क्या लड़ेंगे? उनको तो आपने बांटा हुआ है जातियों में, आप ही की बांटी जाति है। आपके तो पैर छुए क्योंकि आप ब्राह्मण हैं, और वो जूते खाए हैं आपके। ऐसे चलेगा? तुम्हारे बाप का देश है, खरीदा है तुमने देश। कौन से सेल डीड है तुम्हारे पास? ये देश सबका है, ये ब्राह्मण का भी है, तो ये उन छोटे लोगों का भी है जिनको आप नीची नजर से देखते हैं, जिनको धोखा देते हैं आप, और दे रहे हैं। अपनी मर्जी से आप स्टाफ भर्ती कर लीजिए, पूछे भी मत, वैकेंसी भी मत पब्लिश कीजिए, भर लीजिए बस। ना कोई इसमें गरीब आएगा, ना कोई पिछड़ा वर्ग आएगा, ना कोई और आएगा। बस आपके आदमी आरएसएस के आएंगे। ये नहीं चलने वाला। जितने पाप कर लीजिए, एक दिन घड़ा पाप का भरता है तो पानी भरा जाता है, रोज फूटता भी है घड़ा। लोग सो रहे हैं अभी, आप फायदा उठा रहे हैं। लोग सोते रहेंगे, आप फायदा उठाते रहेंगे। और अफसोस इस बात का है कि पढ़ा लिखा भी सो रहा है। पढ़े लिखों का ज्यादा दुख है मुझे। तो अनपढ़ को तो समझ नहीं आती बात, उसको कहने का फायदा भी नहीं है। पढ़ा लिखा व्यक्ति जो अपने आप को बहुत अपडेट समझता है, पीएचडी का समझता है, डॉक्टर समझता है, बहुत हाईली क्वालिफाइड समझता है, वो सोचता नहीं है इस देश के बारे में। अफसोस इस बात का होता है। अरे क्या करोगे? लेके जाओगे यहाँ से? कुछ करो उस देश के लिए। कुछ नहीं करोगे तो कुछ फायदा नहीं है। आपको अपने से मतलब, बस मेरा जॉब होना चाहिए, मेरा बंगला होना चाहिए, मेरे आराम होना चाहिए, मुझे क्या लेना है। मेरे बच्चों के लिए अप्रोच का कोई सोर्स होना चाहिए कि अप्रोच लगा दूं, उनको जॉब मिल जाए, उनको आगे कहीं हायर स्टडीज में एडमिशन मिल जाए। बस आपको इससे मतलब, और इससे मतलब किसी से नहीं है। देश जाए भाड़ में। अरे कल को फौज भी यही सोच ले तो आप क्या करेंगे? हमें क्या लेना देना है इस देश से? हम तो जाके हमें जैसे ये प्रॉपर्टी डील करके पैसे लेते हैं, जैसे हेरा फेरी करके हम भी कमा लेंगे, हमें क्या जरूरत है देश रक्षा करने में? सोचिए फिर क्या होगा। वो भी आदमी है, उनकी भी मजबूरी होगी, वो फौज में गए, आप गए, बताइए कितने नेता फौज में गए, उनके बच्चे गए? कोई नहीं गया। बस बातें बातें करा लो इनसे, जितनी मर्जी बातें करा लो, स्लोगान डलवा लो इनके। ऐसे है हमारा देश। क्या करोगे? सच्चाई नहीं है यहाँ। ये नहीं जानते कि मानव सबसे बड़ा होता है, उसमें कोई जात नहीं होती। जात तो ज्ञान से आती है, मेहनत से आती है। जैसा आप काम करेंगे वैसे आपकी जाति होगी। लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ। हर आदमी अपनी जाति में मस्त है, अपनी सिफारिश निकालने में मस्त है कि मेरा वो मिनिस्टर है, मेरा वो थानेदार है, मेरा वो जज मजिस्ट्रेट मेरा दोस्त है, मैं अपना काम निकाल लूंगा। अपना काम निकाला, बात खत्म। अगर ऐसा ही करना है तो कोई भारत का कल्याण नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। ये भारत गर्त में जाएगा ही जाएगा। खुश हो लो आप। अभी 70-75 साल भी नहीं हुए अभी आपको छोड़े हुए अंग्रेजों को भगाने के बाद, और आपको दोबारा ऐसा ना हो कि वही हो जाए, कोई और आके बैठ जाए। फलस्तीन से सीखो। जानते हो फलस्तीन? कभी सुना है कि नहीं सुना है? फलस्टाइन, इजराइल, झगड़ा इनका आपस में।
इजराइल एक घमंडी कंट्री, एक आतंकी कंट्री, एक ऐसी कंट्री जो फिलिस्तीन को दबाना चाहती है। उसकी जमीन खा गए, वो सब कुछ खा गए, लेकिन फिर भी दबाना चाहते हैं। अमेरिका उसको मिलकर और दबाना चाहता है, खरीदना चाहता है फिलिस्तीन को, लेकिन फिलिस्तीन बिकने को तैयार नहीं है। अभी कहा $50 की ले लो, 50 बिलियन डॉलर की एड हमसे ले लो। अभी बहरीन में उनके 2 दिन की हुई वर्कशॉप, लात मार दी, उसने गई तक नहीं वहां, भाड़ में गई तुम्हारी हेल्प। हमें हमारा देश की इज्जत प्यारी, हमारा अपना देश प्यारे, अपने अधिकार प्यारे हैं। पहले हमारे अधिकार दो, उसके बाद हमें भीख मत देना, हम खुद ले लेंगे। आप भीख देके हमें खरीदना चाहते हो, इस बात को समझिए। एक छोटी सी कंट्री, ज्यादा लोग नहीं है, होंगे मुश्किल से 7-8 करोड़। इतने से लोग दुनिया में फैले हुए स्ट्रगल कर रहे हैं कहीं 50-60 साल से। हमने क्या किया है? बनी बनाई आजादी मिल गई, मजे मार रहे हैं। अरे जब स्ट्रगल करते हैं, संघर्ष करते हैं, तो अकल आती है जीवन में, जीवन क्या होता है। पकी पकाई मिल गई, खा लिया, सो गए, बस यही हमारी जिंदगी रह गई है। ऐसा करके देखो, सूडान में देखो क्या हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, फौज से झगड़ा कर रही है पब्लिक। वेनेजुएला में देखो क्या हुआ। अरे लेसन सीखो, लेसन। हराम की खाना कब तक चलेगा? गांधी को दुआ दो, सुभाष को दुआ दो, जो आपको दिला गए फ्री में, मुफ्त में मिल गई आजादी, इसलिए वैल्यू नहीं है आपके सामने। फिर की चीज की कोई वैल्यू नहीं होती है। आज पूरा देश बटा है इन चीजों में। पंडित के थ्रू अपनी कोशिश लगाता है, जिसका जहां बस चलता है वो भी चलाता है। देश के बारे में कोई नहीं सोचता है। लूट लो, खा लो, 1% लो, 70% खा लो, बाकी को मरने दो। यह है देश आपका। अरे जाति कर्म से आती है, शरीर से नहीं आती है। शरीर जैसा होगा वो होगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जैसा आप काम करेंगे, जैसा सोचेंगे, जैसा दिमाग चलेगा, जैसा कर्म करने की क्वालिफिकेशन आपके पास होगी, जितना ज्ञान विज्ञान आपके पास होगा, वो आपकी जाति है। जाति पैदा होके नहीं आती। ठीक है, आप पंडित परिवार में पैदा हुए होंगे, राजपूत पैदा हुए होंगे, आप मुस्लिम में कहीं पैदा हुए होंगे, आपके पैदा होने से आपका ज्ञान विज्ञान नहीं बढ़ेगा। आपको सीखना पड़ेगा, स्कूल कॉलेज जाना पड़ेगा, डिग्रियां लेनी पड़ेंगी, काम सीखने पड़ेंगे, तभी आप काम कर सकते हैं। वहाँ जाति काम नहीं आएगी आपकी, वहाँ माइंड काम आएगा, वहाँ आपकी विल पावर काम आएगी, वहाँ आपकी मेहनत काम आएगी, वहाँ आपकी ईमानदारी काम आएगी। वहाँ वही आपकी जाति है। जिस तरह की एक्सपर्टीज आपके अंदर है, जिस तरह ज्ञान आपके अंदर है, वही आपकी जाति है। इतनी सी बात नहीं समझ सकते तो आप मनुस्मृति भी नहीं समझते, आप गीता भी नहीं समझते, आप रामायण भी नहीं समझते, आप वेद विद्या नहीं समझते, कुछ नहीं समझते आप। वेद तो अपने आप में विद्या है। वेद का मतलब क्या होता है? वेद का मतलब नॉलेज होता है, ज्ञान होता है, विद्या होती है, और वेद कर दिया हमने उसको। आप वेद तभी जानते हैं जब आपको विद्या हो। और कृष्ण ने भी कहा है, जब तक आप विद्या ले चुके हैं थियोरेटिकल और उसका आप एक्सपीरियंस नहीं करते, तो वो विद्या भी बेकार है, उसकी एप्लीकेशन बहुत जरूरी है। और वही आपकी जाति है। जाति वही है। जाति माँ बाप की दी हुई नहीं होती, जाति भगवान की दी हुई नहीं होती। जाति आपके कर्म है। कर्म करे जा, फल की चिंता मत कर, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। ये तो धर्म का ज्ञान है, मेरा ज्ञान नहीं है। तो फिर कहां से बीच में जाति आ गई? क्यों राज करना चाहते हैं आप लोगों पे? अरे देश सबका है। देश एक प्राइम मिनिस्टर की वजह से नहीं चलता, देश किसी राष्ट्रपति की वजह से नहीं चलता। देश भारत की पब्लिक। आप सोचिए, अगर आज टैक्स देना पब्लिक बंद कर दे तो क्या कर लेगा प्राइम मिनिस्टर, क्या कर लेगा राष्ट्रपति? अगर पब्लिक अनरेस्ट पे आ जाए, राइजिंग या प्राइसिंग पे आ जाए, हम पैसे नहीं देते सरकार को, तो सरकार सेवा नहीं कर रही हमारी, किस लिए हम पैसा दें? ये क्वेश्चन है। मैं टैक्स क्यों दूं? अगर मेरा प्राइम मिनिस्टर मेरी नहीं सुनता, मेरा प्राइम मिनिस्टर मेरी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करता, तो मुझे टैक्स देने की क्या जरूरत है? क्या ये सोच नहीं आ सकती है? किस अंधेर गर्दी के लिए मैं टैक्स दे दूं, ताकि बैंकों को तुम लुटवा दो मेरे टैक्स की वजह से? मैं हर बात पे टैक्स दूं, अपनी कमाई का आधा टैक्स आपको दे दूं, इनकम टैक्स के नाम पे, वेल्थ टैक्स के नाम पे, हाउस टैक्स के नाम पे, जीएसटी के नाम पे, और पता नहीं किस सफाई के नाम पे, और उसके नाम पे कितने टैक्स आपने भर रखे हैं। सारी कमाई मैं आपको दे दूं, आपकी ऐश के लिए, आपके आराम के लिए, और मैं क्या करूंगा? ये भी एक इश्यू है। आप टैक्स लेते हैं तो काम भी कीजिए। एहसान नहीं कर रहे आप प्रधानमंत्री बन के, राष्ट्रपति बन के मेरे ऊपर कोई। मैं भारत का नागरिक हूँ, आपको फैसिलिटी दी जाती है, आपको पैसा दिया जाता है, आपको सेवा करनी पड़ेगी। और आप सेवा नहीं कर सकते तो आपको सीट पे बैठने का भी हक नहीं है, क्योंकि मेरा पैसा हराम का नहीं है, जनता का पैसा हराम का नहीं होता, मेहनत का होता है। आपको बड़े बड़े बंगलों में बिठाएं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घुमाएं, इसलिए कि आप पोस्ट पर हैं। काम कीजिए, पब्लिक को बेवकूफ मत बनाइए, चोरी से वोट मत लीजिए। ताकत है तो बैलेट से चुनाव करेंगे, जो पहले होते थे। आप वोट के चोर हैं, रॉबर हैं, आपने रॉबिंग की है, आप सीट पे बैठे हैं, जबरदस्ती आपको बिठाया नहीं गया है। तो अगर आप अपने आप को ईमानदार या देवता मानते हैं, अपने आप को देशभक्त मानते हैं, तो देशभक्ति प्रूव कीजिए। आप देशभक्त नहीं हैं, आप गद्दार हैं। आपने धोखा दिया है पब्लिक को। ये भी एक गद्दारी होती है। और गद्दारी किसे कहते हैं? जबरदस्ती जीत लेना। और एक कांग्रेस बेवकूफ पार्टी, छुछंदर पार्टी भाग गई फील्ड से,
कहाँ हो, कहाँ मर गए सब? तुम्हें दम नहीं है बोलने का, तुम आ नहीं सकते सड़क पे, लड़ाई नहीं कर सकते इन लोगों से, तो तुम क्या करोगे? मतलब तुम भी पावर के भूखे हो। तुम्हें पावर मिल जाती तो ठीक थी, तुम्हें नहीं मिली तो रोते रहो, अरे भाग जाओ। अरे कहने तो लोग कहेंगे तो आप हार गए, दूसरे को क्या फर्क पड़ने वाला है? लड़ाई तो करो। लड़ाई करना ही आदमी का हक होता है, धर्म होता है। बेशक हार जाए, हार की चिंता नहीं है, लड़ाई तो करो। पर आप नहीं करेंगे क्योंकि आपके अंदर डर है, आपके अंदर कोई ऐसी चापलूसी है, कोई ऐसी चोरी या डकैती आपने भी की हुई है जो आप डरते हैं, जिसको आपको धमकी दी गई होगी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कि हम ये कर देंगे, ईडी लगा देंगे या हम सीबीआई लगा देंगे या तुम्हें अंदर करा देंगे। ये बातें सबको की गई होंगी, नहीं तो आप सामने आते। इसलिए आप में और बीजेपी में कोई फर्क दिखता नहीं है आज की तारीख। अरे पब्लिक चाहती है, पब्लिक का साथ दो, पब्लिक को जगाओ, पब्लिक से आगे आओ, तो हमारे नेता कहलाओगे। नहीं तो आप नेता नहीं हो, आप छुपे हुए हो, मच्छर हो, कॉकरोच हो, कुछ भी हो, चूहे बिल्ली, कुछ भी समझ लो अपने आप को। ऐसे नेता हमें नहीं चाहिए। ये तो डकैत हैं जो सीट पे बैठे हैं, आप भी उनके साथ ही कम नहीं हो। आपके बताइए कितने क्रिमिनल पहुंचे एमपी उनके? टोटल 233 में से 119 तो बीजेपी के पहुंचे, आपके कितने हैं? 19-20 तो आपके भी होंगे, तो आप भी किसी से कम तो नहीं हो। तो हमें ऐसा देश चाहिए जहां हमारे करप्ट लोग, हमारे ऐसे क्रिमिनल लोग हमारी सत्ता में बैठे और हमारा भाग्य का निर्धारण करें, हमारे भाग्य विधाता वो बन जाए। हमें नहीं चाहिए ऐसा भाग्य, हमें सच्चाई पर आधारित भाग्य चाहिए। मुझे किसी क्रिमिनल से अपना कानून नहीं बनवाना, मुझे क्रिमिनल से अपना देश का भाग्य नहीं लिखवाना। मुझे चाहिए एक भी क्रिमिनल ना हो लोकसभा में, ऐसा देश चाहिए। एक भी क्रिमिनल ना हो राज्यसभा में, ऐसा देश चाहिए। क्यों हो क्रिमिनल वहां पे, किस लिए हो? अगर क्रिमिनल सत्ता में बैठ गया फिर रहा क्या? शर्म आती है मुझे अपने आप को आज की तारीख में कहते हुए कि मेरी लोकसभा इतनी अच्छी है, इतनी सुंदर है, इतनी प्यारी है कि जहाँ 233-45% क्रिमिनल बैठे हैं। कितनी अच्छा देश है मेरा, कितना भाग्य विधाता हो रहा है भारत मेरा, अपना भाग्य भारत कितना अच्छा बना रहा है। आप कभी सोच नहीं सकते किसी बात को? आपको इसके लिए कौन चाहिए बताने के लिए? या राम उतर के आएगा या कृष्ण आएगा या कौन विष्णु आएगा ऊपर से उतर के, या कौन आएगा? आपका दिमाग बंद है क्या? दिमाग में मसाला है, घुस भरा हुआ है क्या? आप सोच नहीं सकते किसी बात को? क्या फायदा आपकी पढ़ाई लिखाई का? आप तो सर पर गंवार ज्यादा अच्छे हैं, बोल तो सकते हैं, आप तो बोल भी नहीं सकते, आप तो डरते हैं। कब तक डरेंगे आप? डरते रहिए, मरते रहिए। देश तो डरने वाला नहीं है। आप नहीं बोलेंगे कोई और बोलेगा, आज नहीं बोलेगा कल बोलेगा, कल नहीं बोलेगा परसों बोलेगा। कब तक चुप बैठे रहेंगे लोग? अंदर अंदर सोचते हैं, आग सुलगती है। जब बहुत शांति होती है तो उसके पीछे बहुत गंभीर तूफान भी आने वाला होता है, याद रखिएगा। आज शांति है, चुप है, सब सब वेट कर रहे हैं, कोई तो बोले, कोई तो आगे निकले। एक निकलेगा तो दूसरा भी निकलेगा, ऐसा ही होता है। बहुत से लोग हैं जो आगे आ रहे हैं, बहुत से लोग हैं, लेकिन जो आने चाहिए वो नहीं आ रहे हैं। ये कांग्रेस वालों, मर जाओगे, समाप्त हो जाओगे। नहीं तो अभी भी समय, आगे आ जाओ, सड़कों पे आ जाओ, लड़ाई करो गवर्नमेंट से, लड़ाई करो राष्ट्रपति से, गिरफ्तार पकड़ो चुनाव आयोग के कि तूने ऐसा क्यों होने दिया। सारी गड़बड़ चुनाव आयोग ने कराई है, वो खुद ही बीजेपी का था उस टाइम, उसने खुद ही इलेक्शन कराया है, वो सभी मेंबर से खुद सपोर्ट किया है। हमें ऐसा चुनाव आयोग नहीं चाहिए, हमें ऐसा राष्ट्रपति भी नहीं चाहिए जो कुछ ना बोले। हमें चाहिए सही लोग, देश को चलाने वाले लोग, सच्चाई पे आधारित लोग। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। दुख इस बात का होता है, आपको दुख नहीं होता, मुझे नहीं पता क्यों नहीं होता। आप संविधान पढ़ते नहीं, संविधान आपकी समझ नहीं आता कि आप जानते नहीं कि देश भारत क्या है। आप उसी भी चाल पे चलते जाते हैं जैसे ये गधे नेता बोलते रहते हैं टीवी पर आके। तो वो आपकी इच्छा है। ना मैं नेताओं का चमचा हूँ, ना मैं किसी पार्टी का मेंबर हूँ, ना मैं होना चाहता हूँ ऐसी पार्टी का मेंबर। हमें ऐसी पार्टी नहीं चाहिए जो देश को बर्बाद करने पे लगी हो। हमें नहीं चाहिए ऐसी पार्टी। आज वही हो रहा है। प्रधानमंत्री को क्रिकेट की चिंता तो है, प्रधानमंत्री को उन बच्चों की चिंता नहीं है बिना दवाई के मर गए। हमें ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। हमें चाहिए गरीबों को सोचने वाला प्रधानमंत्री। ऐसा नहीं चाहिए 100 रुपये 90 रुपये तो चोरों को दे दे और 5-10 रुपये गरीबों के नाम कर दे कि ठीक है। अरे आप बड़ी बड़ी बातें करते, आयुष्मान योजना की, क्यों नहीं बच्चों के इलाज हुए उस योजना में? कैसे मर गए ये बच्चे? तो किधर है आपकी योजना? शर्म नहीं आती आपको झूठ बोलते हुए? अरे एक ईवीएम मशीन पे क्यों डिपेंडेंट हो आप? गुलाम हो ये मशीन के? क्या क्या दिया ये मशीन ने आपको? जिताना? इसका मतलब आपने हेरा फेरी की है। अगर आप शक्तिशाली हो, पावरफुल हो, आप समझते हो पब्लिक आपके साथ है, आपसे प्यार करती है, आपके काम को पसंद करती है, तो क्यों नहीं बैलेंस चुनाव करा के देख लेते एक बार? ताकत है तो कराइए। अगर आप हिम्मत रखते हैं तो आप देशभक्त कहलाते हैं अपने आप को। तो नहीं, ना देशभक्त हो, ना आप देश की अच्छाई में हो, आप सिर्फ हेरा करने में बिलीव करते हो, विश्वास करते हो कि हेरा फेरी से मैं जीत जाऊं, जैसे भी जीत जाऊं। पर कब तक चलेगा? हेरा फेरी की भी लिमिट होती है, पकड़े जाओगे एक दिन, तब क्या हाल होगा सोच लो। हेरा फेरी की एक दिन खराब पड़ता है, पाप का खराब बढ़ ही जाएगा एक दिन आपका, फिर आप क्या करेंगे? ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा खींचेंगे, एक और सप्ताह खींच लेंगे 5 साल की, लेकिन मैं लगता नहीं मुझे आप खींच पाएंगे
पब्लिक भड़केगी अवश्य, तो जरूर भड़केगी। ठीक है, आज सो रहे हैं लोगों, चिंता नहीं है, कोई बात नहीं, देखा जाए, जीत गए तो जीत गए, अगली बार देख लेंगे। अगली बार भी आपने ईवीएम यूज की, फिर आप जीत जाएंगे, मतलब ये कि आप तो जीत ही जाएंगे, आपको वोट मिले या ना मिले। आपने एक फार्मूला बना लिया, अरे देने हैं वोट, दो नहीं देने तो मैं तो अपने आप ही जीत जाऊंगा, मैं जीत सकता हूँ, देखो मैंने जीत के दिखा दिया ना, आप क्या कर लिया मेरा। अरे हम क्या करेंगे, आपको तो अपने आप सोचना चाहिए। आप इतनी बड़ी पोजीशन में हैं, आपकी सोच ज्यादा मायने रखती है बगैर मेरे सोचने के। मैं तो छोटा सा आदमी हूँ, एक कोई वैल्यू नहीं जिसकी। आप 130 करोड़ में हैं, आपकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो आपको सोचने का हक बनता है। आप जनता को सही रास्ता दिखाने के बजाय बस आपको सीट से मतलब और किसी से मतलब नहीं। सारी दुनिया जानती है आज की तारीख में, ऐसी कोई कंट्री नहीं जिसको पता ना हो कि आपने 250 सीटों की हेराफेरी कराई है। सब जानते हैं इस बात को, अच्छी तरह से जानते हैं। सब न्यूज चैनल में बताया गया है बाहर की में कि यहाँ पर ऐसा हुआ है, यहाँ पर ईवीएम मैनेजमेंट हुआ है, ये रियल सरकार नहीं है, सबको पता है, सारी दुनिया जानती है। बस नहीं जानते तो हमारे भारत के लोग नहीं जानते, हमारे भारत की जनता नहीं जानती, क्योंकि लस्सी पी के सो जाती है गर्मी में। हम सो गए हैं, हम जागेंगे नहीं, क्योंकि हम खाने पीने वाले लोग हैं। हमें अपने परिवार से मतलब है, हमें कोई मतलब नहीं देश से। देश का जब वो देखा जाएगा, हमें क्या लेना है इस देश से। जब सोच ऐसी गंदी हो जाए, उसका कोई इलाज नहीं हो सकता। आपको सोचना होगा, नहीं तो आप भी पिटिए, पिटते रहिए, घोंसले में घुसे रहिए, कोई पूछेगा नहीं, कोई नहीं पूछेगा। और ये आहिस्ता आहिस्ता सब खत्म कर देंगे। संविधान गया, बेड़ा गर्क हो जाएगा संविधान का, देख लेना आप। और संविधान का बेड़ा गर्क तो आपका भी बेड़ा गर्क, आपके सारे अधिकार छिन जाएंगे। इन्होंने मनुस्मृति लागू कर देनी आहिस्ता आहिस्ता, इन्होंने हिंदू राष्ट्र बना दिया। हिंदू राष्ट्र में पकौड़े खाइएगा, पकौड़े तलिएगा। और उनको लिए चले, मुस्लिम लोगों को वोट का छीन लिया जाएगा अधिकार, ये पक्की बात है। तो इनका क्या होगा, हरिजनों का, ये पंडित बन जाएंगे जो अपने आप को आज की तारीख में कहते हैं हरिजन लोग, SC ST लोग। इनका क्या होगा, वो तो इधर के भी नहीं रहेंगे, इधर के भी नहीं रहेंगे। ये होने वाला है, इसलिए अपने होश में आ जाओ। ये देश 2-3% लोगों का नहीं है जो पैसे वाले हैं, जो उच्च जाति के, जो किसी को समझते नहीं, उनका दोष नहीं है। देश पूरे भारत का है, पूरी भारत की पब्लिक का है। सबका अधिकार है इस देश पर, सबको साथ रहना है, सबको देश को आगे बढ़ाना है। अगर आप इतना नहीं सोच सकते तो इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, ज़्यादा बोलने का फायदा भी नहीं होता है। बार बार एक बात को करने का मतलब भी बेकार है। एक बार बोल दिया, 2 बार बोल दिया, आपकी समझ आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती तो मैं क्या करूँ। अपने आप सोचिए, सेल्फ इनिशिएशन भी बहुत चीज़ होती है। मैं एक बार कह दूंगा, 2 बार कह दूंगा, आप नहीं सोचते तो इसका कोई इलाज नहीं मैं कर सकता। आप ऐसे ही पिटते रहिएगा जिंदगी भर। आप इसी काम के लिए पैदा हुए हैं कि 5 साल में आप वोट दे दें और करा के सो जाएं। फिर बोलिए जॉब नहीं है हमारे पास, फिर बोलिए काम नहीं है हमारे पास, खाना नहीं है हमारे पास, हमें ये प्रॉब्लम है। वो किसको मुंह ऊपर करिए आसमान में और बोलते रहिए, उसका कोई फायदा नहीं होगा, कोई सुनने वाला नहीं है। क्योंकि आपने ना तो एम्प्लॉयमेंट के नाम पे वोट दिया होगा, ना आपने गरीबों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के नाम पे वोट दिया होगा, आपने तो राष्ट्रवाद के नाम पे वोट दिया। जैसे ये देश गुलाम था, इस देश में लड़ाइयाँ हो रही थी, इस देश में कोई था नहीं बचाने वाला, ऐसे नाम पे आपने वोट दिया। इस देश में कुछ है ही नहीं, ऐसे नाम पे आपने वोट दिया। अगर आपने वोट इस नाम पे दिए हैं तो ठीक है, बैठे रहिए, कोई पूछेगा नहीं आपको। फिर 5 साल में वही रिपीटेशन हो जाएगा, फिर बैठे रहिए। अगर आपकी किस्मत ऐसी आप बनाना चाहते हैं तो आपको बधाई हो ऐसी किस्मत की। आपको ऐसा गलत राष्ट्र चाहिए तो आपको बधाई हो ऐसे राष्ट्र की। आपको कुछ करना नहीं है, आपके खून जम चुके हैं, पानी बन चुके हैं, तो आपको बधाई हो ऐसी। आपको इसी तरह से लानत की जिंदगी जीनी है तो ठीक है। सबसे अमीर देश भारत, अमेरिका से भी ज्यादा अमीर, पैसे में, वेल्थ में, नेचुरल एनवायरनमेंट में, उसके बाद भी हमारा यह हाल है कि हम रोटी खा नहीं सकते, पब्लिक में आराम से रह नहीं सकते, लॉ एंड ऑर्डर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमको जो मर्जी पीट दे, हमारा कोई भी नेता किसी पुलिस को पीट दे, किसी बच्चे को मार दे, दवाई ना दे, अस्पतालों के हाल हो, आप सहते रहिए। आप इसी के लायक हैं क्योंकि आप ऑथोराइज हैं इस काम के लिए, आपके कैरेक्टर यही हैं, आपको ऐसा ही रहना है। तो इसका कोई विश्वास नहीं कर सकता, कोई इलाज नहीं कर सकता, आपको सहना होगा। आपकी लड़कियों का रेप हो जाए, हो जाने दो। अरे कितनों ने गर्दन काटी, रेपिस्ट की आज तक कोई हटाएगा नहीं काटी, बस पुलिस को रिपोर्ट लिखा दो। अरे पुलिस तो खुद रेपिस्ट है, क्या लिखा दो। एक्शन लो, ठीक होते हैं, एक मारोगे तो 1000 रेप बंद हो जाएंगे, लेकिन नहीं करेगा कोई। अरे पुलिस तो खाने वाली है, पुलिस किसका भला करती है। जो रिपोर्ट लिखाता है, बहुत से केस होते हैं उन्हीं के ऊपर रिपोर्ट लिख देती है। ऐसा हो रहा है, बिहार में हुआ, बच्चे मर गए तो उन्हीं के ऊपर रिपोर्ट कर दी गई, उसे FIR दी गई। ऐसी पुलिस जहाँ लॉ एंड ऑर्डर नहीं, पुलिस खुद ही चोर है, डकैत है, जहाँ कानून सुनता नहीं, कोर्ट सुनता नहीं, जहाँ पावर चलती है, एविडेंस पूरा होता नहीं। 25 साल बाद किसको याद रहने वाला है कि आपके साथ क्या हुआ था। आपको याद रहेगा नहीं रहेगा। तो जहाँ जुडिशरी इनएक्टिव हो गई हो, जहाँ प्राइम मिनिस्टर की कोई वैल्यू ना हो, अपने आप को बादशाह समझने लगा हो, इस देश का मालिक समझने लगा हो, तो इस देश का लोकतंत्र का मतलब क्या है। कहे का लोकतंत्र, वो तो घड़ा तंत्र हो गया, वो तो एक बकवास तंत्र हो गया। ऐसे तंत्र में आपको जीना है तो जिए। मोदी के नाम पे, मोदी को
पूजा कीजिए, उसका मंदिर बना के पूजिए, गॉडसे को मंदिर बना के पूजिए, गांधी को फेंक दीजिए। आपको ऐसा देश चाहिए तो आपकी इच्छा है, सुभाष को फेंक दो, गांधी को फेंक दो, गॉडसे की बहुत बड़ी मूर्ति बनाइए, उसकी पूजा कीजिए, मंत्र उच्चारण कीजिए, उसके ऊपर फूल की मालाएं चढ़ाइए। आपका भविष्य यही है तो यही सही, इसका कोई इलाज नहीं कर सकता। हमारे बता रहा हूँ आपको। अब मैं ज़्यादा बुराई किसी की नहीं करूँगा, क्योंकि ज़्यादा बात करने का फायदा नहीं है। प्राइम होती है, मेन होती है कि आपको उठाना चाहता हो तो जागिए, अगर नहीं जागते तो सोते रहिए। मेरा क्या है, मैं तो कुछ हो सकता है कुछ दिनों में मैं भी चलता बनूँ ऊपर, ज़्यादा उम्र मेरी भी नहीं होगी, हर एक की कोई होनी थी। अभी मैं 65 साल का हूँ, कब चल दूँ कौन जानता है, लेकिन अपना फर्ज समझता हूँ इसलिए बता रहा हूँ। स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको, इन चोरों को पीटना होगा, इन दगाने को सत्ता से हटाना होगा, ईवीएम के प्राइम मिनिस्टर को हटाना होगा, ईवीएम की लोकसभा को हटाना होगा। ये सब ईवीएम से बन के आए हैं, कोई लोगों के बैलेट से बन के नहीं आए हैं। अगर आप इतना कर सकते हैं तो आपका भाग्य आपके हाथ में, नहीं कर सकते तो आपका भाग्य इनके हाथ में। जैसे मुझे नचाएं, नाचते रहेंगे, इसका कोई इलाज नहीं कर सकता। बस मैं यही कहूँगा। आपका धन्यवाद बहुत बहुत, आपका समय आपके साथ, देश आपके साथ, सब कुछ आपके साथ। आप अच्छे रहें, बस मैं इतने विश्वास रखता हूँ। जय भारत।